So let's start with the next chapter. Coal and petroleum. So now we are going to start with the PT2 syllabus. So the very first chapter in your PT2 syllabus that we are going to do is now coal and petroleum. Okay. So you all have heard these things: coal, what is coal, what is petroleum, what is fossil fuels, right? In your SST part, I guess. ठीक है, SST part में आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, right? So let us define firstly some common terms. Natural resources. Yes. So what do you mean by the natural resources? Natural means the things that we get from the nature. Okay. So here what we mean by the natural resources. So here we mean all the material that are present in the nature. Okay. So the material that are present in nature. क्योंकि हमने natural कहा है तो that means they must be present in the nature. Okay. And they are useful to us to meet our basic needs. ठीक है, हमारी बेसिक नीड्स जो हैं सर्वाइवल की, उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए ये जो रिसोर्सेज हैं दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, so they are obtained from the nature, plus they play very very important or vital part in meeting our basic needs. Okay, so there are many natural resources that are given by the nature to us. Okay, that include air, that is very very important for the survival. ठीक है, air के बाद water बहुत जरूरी है. Soil. Okay, soil is also very very important. Plants, animals, minerals, coal, petroleum. So these are some of the natural resources that I have written. Okay, so ये कुछ examples हैं natural resources की जो मैंने लिखी. Okay, so they are obtained from the nature, plus they are very very important for the basic survival. Okay, now based on their availability, ठीक है, अवेलेबिलिटी की बात करें या अबंडेंस की बात करें कि ये हमारे पास कितने प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके, बेस्ड ऑन द अबंडेंस और अवेलेबिलिटी. Okay, so they are further classified as exhaustible and inexhaustible natural resources. तो ये हमारे पास अर्थ में किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है. दे आर फर्दर डिवाइडेड एज exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. Okay, so it is very much clear from the name itself, exhaust. हम कहते हैं ना we are exhausted today. Exhausted का मतलब क्या है कि मेरे में एनर्जी नहीं है, right? I don't have any energy now. I can't do this. Okay, so in the same way, the natural resources they also get exhaust. वो भी कहते हैं कि मेरे पास अब एनर्जी नहीं है. That means I am not in that position that I can give you energy continuously. Okay,
तो एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या है कि ये भी खत्म हो रहे हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एग्जॉस्टमेंट. ओके, so if we keep on using them, if we keep on using them in a very unnecessary way, they will be exhausted. ये खत्म हो जाएंगे with time. Okay, so they will be exhausted, they will end with time. But inexhaustible, inexhaustible is the opposite for the exhaustible one. Inexhaustible का मतलब क्या है कि that they can be recycled or regenerated again. ठीक है, हम इनको यूज करते रहेंगे बट फिर भी ये अपने बाद में ये रिसाइकल होते जाएंगे, राइट, रीजनरेट कर सकते हैं हम. दे आर नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून. ओके, सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दे कैन बी एग्जॉस्टेड, राइट. So they are, since they are present in limited quantity. Okay, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एग्जॉस्टेबल वन. Since they are present in very limited quantity, so they will be get exhausted. Okay, so they will be get exhausted over a period of time. अब वो अपने आप तो खुद तो एग्जॉस्ट हो नहीं रहे, राइट. Who is using them? We human beings. So with the continuous human activities, if they will be used unnecessarily, right, they will be exhausted one. Okay, so here the normal examples or common examples, you know, coal, petroleum, natural gas, minerals. Okay, so these are classified as exhaustible natural resources because they take a huge time to generate. ठीक है, इनको जनरेट करने के लिए, इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ओके, अब इसी में ही हम पहले कवर कर लेते हैं, एग्जॉस्टेबल में ही. एग्जॉस्टेबल में भी जो रिसोर्सेज आई हैव रिटन, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. ओके, एग्जॉस्टेबल में ही हमने जो रिसोर्सेज लिखे हैं वो आगे आपने पढ़े भी होंगे, आई गेस. You all have studied renewable and non-renewable resources. Yes, you all have studied, right? So exhaustible resources, they are further classified as renewable and non-renewable resources. Again, it is clear from the name, renewable, जिनको हम renew कर सकते हैं, regenerate कर सकते हैं, recycle कर सकते हैं. They are known as renewable resources. But the resources that can't be renewed, right? Renewed का मतलब दोबारा regenerate नहीं कर सकते, हम उनको recycle नहीं कर सकते. Okay? That are non-renewable resources. Clear? Clear? So renewable resources that can be renewed, that can be recycled again and again, regenerated. हम इनको रीजनरेट कर सकते हैं दोबारा दोबारा. ओके, so give me some examples of renewable resources, beta. Akul, what we have done natural resources. After natural resources, we did exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. ठीक है, अब उसके बाद exhaustible की ही further types है, renewable natural resource and non-renewable resource. तो renewable जिनको आप regenerate कर सकते हो, recycle कर सकते हो over a period of time, that are known as renewable resources. Okay, so give some examples of renewable resources, beta.
Soil, wind, yes. Very good. Forest, very good. Soil, wind, forest. ठीक है? So these all are very good. Solar energy also. So these all are termed as renewable resources because we can renew them again and again and again over a period of time. Okay? Soil भी आप दोबारा जनरेट करवा सकते हो, ठीक है? विंड एनर्जी भी आप जनरेट करवा सकते हो. फॉरेस्ट, राइट? ट्रीज प्लांट करोगे तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम इयर्स अगो, राइट, इयर्स बैक, वो ग्रो कर जाएंगे एंड इट विल कंप्लीट लुक लाइक अ फॉरेस्ट. ओके, सोलर एनर्जी भी जो है हम रिन्यू करते हैं. ओके, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, so they all can be renewed again and again. Next, coming to the next type is non-renewable. Coming to the next type is non-renewable. So what that means now? Non-renewable means we can't renew them. Can't be renewed, recycled और regenerated. कुछ भी term use कर सकते हो, right? Over a certain period of time. एक certain period of time में जिन चीजों को हम दोबारा generate नहीं कर सकते, so that will be termed as non-renewable resources. Very good, Ananya. Fossil fuels, natural gas, oil, coal, petroleum, so they all are under the category of non-renewable resources. Okay, so you can write down coal, petroleum, fossil fuels, natural gas. Okay, so under the category of non-renewable resources. Okay, clear beta? Any doubt to anyone till now? तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है ये तो, ठीक है? ये आप एसएसटी में भी पढ़ते हो अपना. So after non-renewable resources, we are going to do inexhaustible resources. Inexhaustible. Inexhaustible का मतलब क्या है? Data not going to be exhaust, जो खत्म नहीं होने वाले हैं, right? जैसे हमने renewable की बात की ना, that we can renew them again and again. So they are of such type. Okay, inexhaustible. So that means they are present in unlimited quantity. Right? इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहे हैं. That means they are present in unlimited quantity. Okay. So they are not likely to get exhausted. खत्म नहीं होंगे. So you can give examples. So that means कि जो हमने exhaustible किए हैं उसमें non renewable वाले आ जाते हैं, जो हमने renewable वाले किए हैं उसमें inexhaustible वाले आ जाते हैं. ठीक है? So yes, sunlight, air, wind, right? Clay, sand, rain. Okay, water. So they all come under the category of inexhaustible natural resources.
So you might be thinking why I have added water here, because water is present in excess, ठीक है, but it is only the water that we consume that is less actually, ठीक है। वाटर साइकिल के कारण जो वाटर का बेसिकली अमाउंट है अर्थ के ऊपर वो कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। Have you studied about the water cycle, right? So it is only the drinking water or the consumption water that is present less in amount. जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं हमारे लिए, that the water which is fit for drinking, fit for our purposes, वो कम है। बट एक्चुअल में अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ वाटर देखो अर्थ के ऊपर, that is constant, वो रीजनरेट होता रहता है रेनफॉल के कारण, रेन के कारण। ओके, क्लियर टिल नाउ? यस, एनी डाउट टू एनीवन बेटा? ओके, so coming to the next, now we are heading to the main heading of our chapter, that is coal and petroleum. Okay, so you all know coal and petroleum, why we use them. Yes, why we use coal and petroleum? Petrol is used in your vehicles, right? So it acts as a fuel. Okay, so let's define firstly what is a fuel. Okay, let's define firstly what is a fuel. क्योंकि ये चीजें जो है वो हम कॉमनली अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, जैसे कोल है, ठीक है, कोल भी हम घरों में यूज करते हैं, वी यूज इट एट आवर होम्स आल्सो। ओके, अब नहीं बट पुराने टाइम में जो लोग थे वो यूज करते होते थे घरों में। ओके, यस, फॉर बर्निंग पर्पसेस के लिए ऑटोमोबाइल्स हैं, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण यू कैन बेसिकली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो व्हाट इज फ्यूल एक्चुअली? So that they are the materials जिनको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। किस लिए? ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। ओके, so fuel, it is a material that is basically burned so that it can give us energy in the form of heat. Okay, अब हमारे लिए मेन कौन से फ्यूल्स हैं? कोल एंड पेट्रोलियम, right? Because in this chapter we will be studying in detail about the coal and petroleum as the fuels. Okay, so they come under the category of fossil fuels. Okay, they come under the category of fossil fuels that are basically exhaustible ones, जो exhaust कर जाएंगे. Okay, so let's define the fossil fuels firstly. So these are the remains of dead ओके, तो आपने हिस्ट्री सुनी होगी कि बहुत सारे टाइम पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो अंडर हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो नीचे दब गए, राइट? दब गए, राइट? तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ओके, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। ओके, राइट? So this is basically the history of the fossil fuels. We will be discussing in detail about the coal and the petroleum, that how they are formed. Okay, so fossil fuels, they are formed from the remains of dead plants and animals under the earth. ठीक है, millions of years ago, बहुत सारे टाइम पहले, ठीक है, बहुत टाइम पहले क्या हुआ था, राइट? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, जो उनके रिमेन्स थे, दे दैट गेट ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस एंड द वेरियस कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, दे गिव राइज टू द फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। यस, ठीक है,
So this is the thing about the fossil fuel. तो fossil fuels कौन कौन से हमारे coal, petroleum, natural gas. Okay. Okay. So let's discuss firstly about the coal. कैसा होता है coal बेटा? You all have seen coal. What is the color of coal beta? So that is black, right? Hard hota hai, right? That is the hard substance. And this is black in color. Hard hota hai plus black hota hai. Okay. And first, secondly, it is found in the कहाँ present होता है? Have you heard coal mines? Mines सुना ना आपने, coal mines जहाँ पर होती हैं, ठीक है? So coal that is basically mostly found in the coal mines that are present under the surface of earth. ठीक है जी. तो coal mines से हम क्या करते हैं, coals को लेके आते हैं. Now, do you know where the most common coal mines they are present? कहाँ होती हैं? Where are the coal mines present? Very good, Ananya. Jharkhand, Odisha. In West Bengal, Bihar. Very good. Right? Madhya Pradesh also. Okay. So in Jharkhand, there is a very famous coal mine, Jharia and Bokaro. Right? These are the two famous coal mines in Jharkhand, Bokaro and Jharia. And in West Bengal, Raniganj. Raniganj coal mine in West Bengal. Okay? Clear, beta? So what we have discussed now, that how the coal is formed, right? How the coal is formed, the dead remains of the plants and animals, it gets buried under the earth's surface, and high temperature and pressure and absence of air, right? So prevailing these conditions, they convert that dead remain into the coal. Now we call this process as carbonization. Okay? ये जो सारी conversion हुई है, डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन को हमने कोल में कन्वर्ट किया है, राइट? तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, इसको हम क्या कहते हैं? वी टर्म दिस प्रोसेस एज कार्बोनाइजेशन. ओके, व्हाट वी टर्म दिस प्रोसेस एज कार्बोनाइजेशन. ओके, so you can write down, it is a slow chemical reaction और स्लो केमिकल प्रोसेस. धीरे धीरे हुआ है ये सारा, इसीलिए इसमें बहुत मिलियन ईयर्स अगो लिए, मिलियन ईयर्स का टाइम लगा है इस सबको. ठीक है? ओके, it takes millions of years to form or to convert that remain into a soluble, or you can say into a more useful form as carbon. Okay, so लिख लिया ईशान बेटा आपने? Shall I rub it?
Yes, Ishan, shall I rub it? Okay. So slow chemical process of conversion of dead vegetation into coal. किसमें कन्वर्ट किया है हमने उसको? कोल में कन्वर्ट किया है. किस इन्फ्लुएंस के अंदर? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर. राइट. So this process we call this as carbonization. Now note down your homework. You have to write down the uses of coal. Okay, and I'll be asking you tomorrow. कोल के क्या क्या यूजेस हैं आपने वो लिख के लाना है. ओके, दैट इज योर होमवर्क. ओके.